secondary port of ATT1. उसमें हमने बेटा आज second example किया था morning session में. So let me show you a recap of what we did, and then we will proceed ahead. Was the example which we took. Find the height of tide at 1200 hours GMT. Find the height of tide at 1200 hours GMT at Jentbrug, ATT Volume 1 on 6th day of March 1992. So 1200 GMT was the time and Jentbrug was the port. So we went into the geographical index. हमने सबसे पहले तो ये देखा that this particular place is a secondary port. We got the number from here 1539. Then we went into the part 2 of the tide table और part 2 से हमें इस port का data मिल गया. We got the time differences and the height differences. इसकी standard port भी हमें मिल गई. Antwerp is the standard port and we got the seasonal corrections. Then we used our table, this particular table, which we fill up to get the tidal data of the secondary port. हमने इसमें standard port का data fill up किया, फिर इसमें हमने standard port के tides को fill up किया. Now since we wanted the height of tide for 1300 hours, हमने सिर्फ वही टाइम्स पिकअप किए जिनके बीच में ये 1300 का टाइम आ रहा था. So when the data was picked up, we applied the seasonal correction. पहले हमने standard port की seasonal correction को subtract किया. Then we applied the differences, time difference, height difference. We applied the seasonal correction for the secondary port and we got the tidal data for Jentbrug. This was the answer which we got. 845, the height of tide is 2 meters. 1731, the height of tide is 0 meters. So up to here, any doubt in your mind, beta? Okay, great. So once we got these figures, इसके बाद बेटा हमें 1300 टाइम के लिए हाइट चाहिए थी. So as we do in ATT1, we have to go to that standard port graph. उसी ग्राफ से हमें intermediate times की हाइट मिलती है. So in this case, Antwerp is our standard port. So we picked up the graph of Antwerp. इस Antwerp के ग्राफ में हमने बेटा लो वाटर और हाई वाटर को फिलअप किया. Just give me 1 minute, beta. Okay, so we filled up the low water and high water here. उससे हमें interpolation line मिल गई. And our height required, our time required was 1300 hours. So हमने देखा कि high water time से ये कितना दूर है. High water is 846. So interval from high water comes out to be 4 hours 15 minutes. So हमने 4 hours 15 minutes after high water, that means in the plus zone, ये point identify किया. From this point we went upwards and wherever this line touched the dotted line is the NEEPS range line. हमारी जो range है वो बहुत कम थी, हमारी range 2 meters थी, but the range which is here, NEEPS range, minimum range is 4 meters. So we touched the 4 meters range, went up to our interpolation line and went on top. And this gave us the height of tide at 1300 hours, which came out to be 0.55 meters. So this was the question which we did, beta.
हैव ए गुड लुक एट दिस, लेट मी नो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट आ रहा है। सर ये इंटरवल का एक बार बताना सर। ओके ओके, बेटा उन्होंने हमसे जो टाइम पूछा था वो पूछा था 1300 आवर्स। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। 1200 आवर्स GMT, 1 hour was the time difference, so 1300 is the time for which we need the height of tide, correct? यस सर। ओके, अब बेटा हाई वाटर का क्या टाइम है? 0845। 0845। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 1300 है ये हाई वाटर से कितने टाइम के बाद आएगा? 4 hours सर, 15 minutes। आफ्टर हाई वाटर, राइट? यस सर, आफ्टर हैव। This is exactly what the interval is. 4 hour 15 minutes after high water. ओके सर। ओके बेटा, क्लियर? यस सर, और अगर सर ये बिफोर होता तो फिर हम नेगेटिव में लेते। दैट्स राइट बेटा, दैट्स राइट। लेट अस से कि ये 8:45 से पहले होता तो इसमें दो चेंजेस आती क्वेश्चन में। एक तो हमें फिर 1731 नहीं लेना था, हमें इससे पिछले वाला जो टाइड था वो वाला टाइम लेना था लो वाटर का, अगर ये 8:45 से पहले होता। एक तो चेंज ये आती, और दूसरा फिर हम इस ग्राफ में हाई वाटर से नेगेटिव की तरफ जाते। ओके बेटा, अंडरस्टूड? यस सर। सर हम जहाँ जहाँ पे हमने ये हाई वाटर पे हाइट ऑफ टाइड निकाला है, तो अगर हम 17 लो वाटर के टाइम पे देखें, अगर वहां से निकालने का ट्राई करें तो तब भी निकल सकता है ये। Means you want to find the interval from low water, right? यस सर। ओके, अब बेटा वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो जो इस ग्राफ में +1 आवर, +2 आवर, +3 आवर या -1 आवर, -2, -3 दिया गया है, वो हाई वाटर के रेफरेंस में दिया गया है। ओके, ओके ओके, ठीक है सर। सो यस सर। हम लोग लो वाटर के रेफरेंस में इंटरवल के साथ यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे, हमें हाई वाटर के साथ ही इंटरवल निकालना पड़ेगा। यस सर, ठीक है सर। अगर हमारा टाइम 1730 भी आ जाए ना बेटा, 1730, अब वो लो वाटर के बहुत पास है, यस राइट? सर। पर अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो हम 8:45 से ही उसका इंटरवल निकालेंगे, क्योंकि हमारे ग्राफ में जो टाइम दे रखे हैं वो हाई वाटर की रेफरेंस में दे रखे हैं। यस सर, ठीक है ओके, सर। और बताओ बेटा, और कोई डाउट आ रहा है? सर जो ये अब 0.05 आया है हमारा 0.55, इसको हम हाई वाटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना? ऐड करेंगे सर। ये बेटा जो 0.55 आया है, दिस इज स्ट्रेट अवे अवर हाइट ऑफ टाइड बेटा। इसे हमने किसी में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये स्ट्रेट अवे हमारी हाइट ऑफ टाइड है बेटा। ओके सर। ओके, आपने कहीं फैक्टर मेथड की कैलकुलेशन तो नहीं देखी है? किसी बुक में या कहीं पे फैक्टर मेथड की कैलकुलेशन तो नहीं देखी? तभी पूछ रहा था सर मैं। ओके बेटा, फैक्टर मेथड में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए मैं अभी तक वो बताया नहीं मैंने आपको, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं उसको बाद में बता दूंगा आपको। पर फैक्टर मेथड में ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हमें लो वाटर में ऐड करना पड़ता है। बट इस केस में जो ये मेथड हम फॉलो कर रहे हैं इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जो हाइट आपको मिलेगी वो डायरेक्टली आपकी हाइट ऑफ टाइड होगी। सो 0.55 इज योर हाइट ऑफ टाइड। ओके सर। ओके, और बताओ बेटा, एनी मोर डाउट्स?
ओके, ग्रेट बेटा, ग्रेट। सो हमने बेटा अभी सेकेंडरी पोर्ट की टाइड्स कैसे निकालते हैं इसको देखा, और अगर सेकेंडरी पोर्ट में हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए, इस केस में उन्होंने हमें 1300 का टाइम दिया, तो उस टाइम से हमें हाइट ऑफ टाइड कैसे निकालनी है वो भी हमने देखा। अब एक और एग्जाम्पल ट्राई आउट करते हैं। अभी जो हमने निकाला है, टाइम हमें गिवन था और हमने हाइट ऑफ टाइड का पता किया है। अब हम बिल्कुल इससे ऑपोजिट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में करेंगे। हमें अब उन्होंने हाइट ऑफ टाइड दे रखी है, हमें उन्होंने बता दिया है कि हाइट ऑफ टाइड इतनी चाहिए, और निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है, एट व्हाट टाइम दैट हाइट ऑफ टाइड विल बी अटेन्ड। सो शैल वी गो अहेड, अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा? इज इट क्लियर अप टू हियर? यस सर। वेरी गुड। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट टाइप बेटा। ये इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो हमने अभी किया है। ए वेसल नीड्स टू डिपार्ट जेंटबर्ग, सेम पोर्ट, एक शिप ने वहां से सेल आउट करना है। 6 मार्च 1992 की डेट है, जिसके लिए हमने अभी हाइट ऑफ टाइड कैलकुलेट की। द मिनिमम हाइट ऑफ टाइड रिक्वायर्ड टू सेल आउट सेफली इज 1.5 मीटर्स। सो हमें 1.5 मीटर की हाइट ऑफ टाइड चाहिए। फाइंड द लास्ट टाइम to sail out during the AM, that is forenoon hours. एक शिप है, उसे सेल आउट करना है, कार्गो ऑपरेशन खत्म हो रहा है उसका। अब जो मास्टर है उसको पता है कि मुझे 1.5 मीटर की हाइट ऑफ टाइड चाहिए। ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट कि मैं 12 बजे से पहले सेल आउट करना है शिप को। व्हाट इज द लास्ट टाइम व्हेन आई कैन सेल आउट, कितना टाइम है हमारे पास सेलिंग आउट करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन। So everybody understood the question beta? यस सर। Very good. Let's now see how do we solve it. किसी के माइंड में आ रहा है बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर वैसे ही जैसे हमने पिछला किया था, बस लास्ट में जब टेबल बनाएंगे, मतलब वो हाई वाटर लो वाटर का बना के, तो वहां से टाइम निकाल लेंगे ग्राफ से। राइट बेटा, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में एंटर करेंगे। ओनली थिंग इज कि इस बार हम एंटर करेंगे टाइम से, सॉरी, इस बार हम एंटर करेंगे हाइट से, एंड वी गो टू द टाइम। पिछली बार हमने एंटर किया था टाइम के साथ और हमें हाइट मिली थी। इस बार हम एंटर करेंगे हाइट के साथ और हमें टाइम मिल जाएगा। सो लेट्स सी दैट। Plug all the gaps possible. A vessel needs to depart Jenbrug ATT Volume 1 on 6 March 1992. Minimum height of tide required to sail out safely is 1.5 meters. Find the last time to sail out during the AM or the forenoon hours when you have the height of tide as 1.5 meters. We shall use the same information. Required time of height now is when tide is 1.5 meters on 6th March at Jenbrug during the following tides. Why? Because it's the last time. Last time of sailing has to be on the ebb tide. And we know it's ebb tide in the forenoon session. Why? Because high water was at 8:45, low water is at 17:31. So we use the Antwerp curve. Why? Because it's a standard port. We have the high water at 8:45, height 2 meters, low water 17:31, height 0, duration of tide 8:46, range of tide 2 meters. Now we go to the diagram, we mark off the interpolation curve. You can see the interpolation curve coming up here. Now the required height of tide is 1.5 meters. So we start from out here. Required height of tide 1.5 meters. We come vertically down to the interpolation line, and then we turn towards the curve. Now which side do we stop? Now it shall be after high water. Why? Because it was
it's a ebb tide. So we go to the right of the curve and don't stop to the left. Which curve do we go to? Our range is 2 meters. Neap range is 4 meters. So we go up to the neap curve. Then we turn vertically downwards and hit the baseline. And what do we read here? We read here that interval is 1 hour 40 minutes after high water. That means the time when the height of tide shall be 1.5 meters on the ebb tide in the morning shall be 1 hour 40 minutes after high water. And what is the time of high water? 8:45. So therefore, the last time when the vessel can sail out with a height of tide of 1.5 meters shall be 8:45 plus this interval of 1 hour 40 minutes, and that time shall be 10:25 hours. Okay, so just have a good look at this working beta. Let me know any doubts which come in your mind. सर एक बार ये अर्लीस्ट और लास्ट टाइम वाला बता दो सर, ये यूकेसी के रेफरेंस में दे रहे हैं ना सर हम? बेटा एक तो आपको डाउट है अर्लीस्ट और लास्ट में, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। ध्यान से सुनना अभी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखें। उन्होंने हमसे ये पूछा है फाइंड द लास्ट टाइम टू सेल आउट ड्यूरिंग द AM आवर्स। मीन्स 12 बजे से पहले लास्ट टाइम कौन सा है जिस पे हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। करेक्ट। अब हमें यहां पता चला कि 10:25 आवर्स पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर है जो हमें चाहिए थी। अगर 10:25 के 10:26 हो जाते हैं तो बेटा आप मुझे बताओ कि हाइट ऑफ टाइड 1.5 से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सर। कम हो जाएगी, हो सकता है 1.4 हो जाए। तो अगर ये कम होगी तो हम सेल आउट नहीं कर पाएंगे। राइट बेटा? यस सर। सो 10:25 के बाद 12 बजे तक सेल आउट करने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 10:25 पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर होने वाली है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि 10:25 से पहले 10:24 पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। 10:24 पे हाइट इससे ज्यादा होगी, 1.51 हो सकती है, 1.6 हो सकती है। तो उसमें हम सेल आउट कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल सही है, उसमें सेल आउट कर सकते हैं। कभी भी हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर से ज्यादा होगी तो हम सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 10:25 से पहले तो हम कभी भी सेल आउट कर लेंगे, लेकिन 10:25 के बाद सेल आउट नहीं कर पाएंगे। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द लास्ट टाइम टू सेल। दैट इज व्हाई द आंसर इज 10:25। अब ये बात क्लियर हुई बेटा? सर ये तो क्लियर हो गया। जैसे कि ओके। क्वेश्चन में अगर पिछला पार्ट ना दिया होता हमें, ये तो जो रेफरेंस दिया हमने पिछले उससे दिया है, हम स्टार्टिंग से बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं, फिर मेरे को कैसे पता चलता कि मैं ये दोनों ही इंटरवल दूंगा सर? बेटा उस केस में ना आपको सारे इंटरवल लेने पड़ेंगे। आपको 6 मार्च 1992 के सारे टाइम लेने पड़ेंगे। इसमें तो ये एक ही क्वेश्चन से उन्होंने सारे मेथड समझाए हैं, इसलिए ये 2 टाइम के साथ हमारा काम चल गया। पर आप सही बोल रहे हो, अगर इस क्वेश्चन में शुरू से ही ऐसा दिया होता तो हम चारों के चारों टाइम जो है 6 मार्च के वो नोट करते और उनके टाइट्स निकालते। अब बेटा इस क्वेश्चन सर में अगर वो, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। अर्लीस्ट टाइम अगर पूछा जाता तो अर्लीस्ट टाइम के लिए हमें बेटा 8:45 से पहले का भी जो टाइड है ना वो भी निकालना पड़ता, क्योंकि जो अर्लीस्ट टाइम आता है वो आता है राइजिंग टाइड में, और राइजिंग टाइड होगा 8:45 से पहले। 8:45 पे तो हाई वाटर आ रहा है। करेक्ट बेटा? सर। सो यस सर। हम 8:45 से पहले का टाइम निकालते, उसकी हाइट भी निकालते, और फिर हम उन दोनों के बीच में देखते
कि 1.5 मीटर की हाइट कहाँ पे मिल रही है, दैट वुड बी द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट। वेरी गुड बेटा, ग्रेट। और बताओ अगर और कोई डाउट आ। सो इसमें हमने बेटा ATT 1 एडमिरल्टी टाइड टेबल 1 इसकी सेकेंडरी पोर्ट का हाइट ऑफ टाइड निकालना सीखा है। हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि सेकेंडरी पोर्ट के डाटा को कैसे कैप्चर करते हैं, हाइट डिफरेंस टाइम डिफरेंस लेते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी पोर्ट के टाइम्स आते हैं और हाइट्स आ जाती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना हो हाइट को तो हम स्टैंडर्ड पोर्ट का ग्राफ यूज़ करके उसे निकाल सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमें कोई हाइट दे दी जाए और उसका टाइम निकालना हो तो वो भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। सो विद दिस वी बेसिकली कंप्लीट द एडमिरल्टी टाइड टेबल 1। सेकेंडरी पोर्ट, स्टैंडर्ड पोर्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एडमिरल्टी टाइड टेबल्स वॉल्यूम 2 एंड 3 इनकी सेकेंडरी पोर्ट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो शैल वी मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन बेटा? Yes, sir. ओके, सो जस्ट कीप द टाइड टेबल्स क्लोज टू यू। हम लोग अभी एक पर्टिकुलर पोर्ट एक क्वेश्चन पिकअप करेंगे और पर्टिकुलर पोर्ट का जो डिटेल है वो निकालेंगे। दिस क्वेश्चन इज ईजियर देन ATT 1। ATT 1 में हमने बहुत इंटरपोलेशन की है, वहाँ पे इंटरपोलेशन कम हो जाती है। ओके, अभी आप देखोगे डिफरेंस ATT 2 एंड 3 का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा सिंपल है। सो लेट मी शो यू द ATT 2 and 3 secondary port. Okay beta, so we have a question for ATT 2 and we want to find the time and height of high water and low water on 10th April 1992 at Navlakhi. So can you open up the tide table and tell me where does this Navlakhi come in the geographical index? What is the number of this port? Sir, 4331, sir. Very good beta, great. Let's see it here also. Waters, we shall also take examples for the secondary ports in the non-European waters. So let's take this example. Find the times and heights of high water and low water on 10th April 1992 at Navlakhi, and Navlakhi is in Admiralty Tide Tables Volume 2. So we go to the geographical index of Volume 2, ATT Volume 2, which is in alphabetical order. We reach Navlakhi and we find Navlakhi is not in bold and capitals. So it happens to be a secondary port whose number is 4331. So Navlakhi port number 4331 is found to be a secondary port. Now beta with this number can you go to part 2 and see कि ये जो नवलखी पोर्ट है इसका स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सा है? Yes, sir. Yes, sir. Once you find out, let me know. कराची सर। Very good beta. सर बंदर शाहिद राजे। बंदर शाहिद कराची, दो ऑप्शन आ गए बेटा, और बताओ। Any other option?
बाकी लोगों को मिला बेटा? सबको कराची मिल रहा है? सर बॉम्बे सर। वेरी गुड। सो थर्ड ऑप्शन आ गया बॉम्बे। हाँ सर बॉम्बे में आ रहा है। यस सर, बॉम्बे आ रहा है। ये ऑल राइट, ठीक है बेटा, लेट्स सी। From the geographical index of ATT volume 2. Go to ATT volume 2 part 2 to the page which contains details for Navlakhi, where the information is in ascending port number. So we reach 4331. So here, this is the page which contains data regarding the time and height difference. On this page, here we have 4331 Navlakhi. We go to the top of this subsection here, and we find that Bombay happens to be the standard port for Navlakhi. सो बेटा जिनको और पोर्ट मिल रही थी, आर यू ओके नाउ विद बॉम्बे? डाउट सॉर्ट आउट हो गया या अभी भी है? ये सर। ओके, वेरी गुड बेटा. So we have the secondary port Navlakhi. We know its standard port is Bombay. Let's proceed ahead now. And port number for Bombay happens to be 4359, which is given here. Seasonal correction for these ports is from the adjacent page, and that has been now brought in here on the screen. So we have the seasonal correction which applies to this set of ports. And now we identify the information from this page, which we are going to use further, and we'll zoom it in and we'll use it for our further working. So beta, have a look at the seasonal correction also. 4331 और 4359 इन दोनों की seasonal correction हमें चाहिए. So just see, is it there on the same page or the next page? नेक्स्ट पेज पे है सर. Very good बेटा, very good. दोनों नंबर्स की seasonal correction अवेलेबल है? यस सर. Very good बेटा. So in this case you will see दोनों की जो सीजनल करेक्शन है वो अलग अलग कॉलम में दी गई है, राइट? यस सर. राइट, वेरी गुड. सो लेट्स प्रोसीड अहेड. The information we shall be using would be for the standard port Bombay. You can see it here. For the secondary port Navlakhi, which is here, height and time differences, and also the seasonal corrections. So now we have on the screen the relevant information which is zoomed in. We have the information for the standard port Bombay. We have the data for Navlakhi, and we have the seasonal corrections. Here we see that the time zone for Navlakhi happens to be minus 0530 hours. Tide is required for 10th April 1992 at Navlakhi. Time difference in tides between the standard and the secondary ports may cause a change in dates of the corresponding tides between the standard and the secondary port. So we'll have to be wary of this fact. So it is better to also consider the tide timings at the standard port over the dates on either side of the date in question. That means one day before the date required and one day after that, and then we can rule out whichever tides are not applicable. Okay, so everybody comfortable with these three data items beta? Standard port Bombay, secondary port Navlakhi and seasonal correction. ये तीनों आपको मिल गए हैं? Anybody having any problems up to here? नो सर, ओके. वेरी गुड बेटा. अब बेटा हम नेक्स्ट जाएंगे बॉम्बे पोर्ट के डेली पेज पे, और वहाँ पे हम 10th अप्रैल 1992 ये वाली डेट को देखेंगे. हो सकता है इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद के टाइम भी हमें लेने पड़े. सो लेट अस गो टू द बॉम्बे पोर्ट पेज एंड फाइंड आउट द 10th अप्रैल 1992.
We shall continue using the same tidal prediction form that we had used for secondary ports in the European waters. So this tidal prediction form needs no introduction, so we shall be using it for calculations of tides. बेटा, if you want to make the table, you can make it in your notebook. यही टेबल हमारे वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में भी यूज होता है, सेम टेबल. So you can make this table in your notebook. Let me know once done. बना ली सर. Very good, beta. Let's proceed. At secondary ports in non-European waters as well. So we have the first part of the tidal prediction form. Obviously, this will be filled up from the data for the standard and the secondary port. The relevant data is already on the screens. So the standard port happens to be Bombay 4359. We fill it up here. What do we need? We need the time and height of high water and low water. At which port? We need it at the secondary port, that is Navlakhi 4331. So we fill it up here. The date on which it is required is 10th April 1992. The time zone at Navlakhi is here. It's minus 0530 hours. So we go to the next part of the tidal prediction form, which talks about the applicable time and height of high and low water at the standard port. Since we need it for 10th April at Navlakhi, as said earlier, we shall just glance through. Okay. So beta, you can see the Bombay port data for 3 dates, 9, 10 and 11. अब बेटा आप मुझे बता सकते हो कि हमें कौन कौन सा टाइम पिक करना पड़ेगा. 10th में 3 टाइम दे रखे हैं, इनको छोड़ के और कौन कौन सा टाइम पिक करना पड़ेगा. 9th का या 11th का कोई टाइम आएगा बेटा? हैव ए लुक एट द टाइम डिफरेंस. 2246 वाला आएगा सर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सो यू आर राइट. 9 को जो 2246 वाला टाइम है, आप देखोगे हमारा जो टाइम डिफरेंस है दैट इज क्लोज टू 3 आवर्स. 250 to 330 is the range. So जब हम 2246 में ये टाइम इंटरवल को ऐड करेंगे तो ये 10th डेट में शिफ्ट हो जाएगा. So 2246 आएगा और 10th के तीनों टाइम्स आ जाएंगे. Everybody clear about this बेटा? Yes, sir. Very good बेटा. Let's go. Tides one day before that. एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे. हाँ बोलो बेटा. सर मान लो कि हमें 10th में 4 टाइम दिए होते, 22 समथिंग कुछ टाइम होता नीचे लास्ट में 4th वाला, तो उस Right. केस में मैं 11th में कर सकता हूँ ना? ओके बेटा. तो तुम बेटा मुझे बताओ कि 10th का जो लास्ट टाइम दे रखा है वो कौन सा टाइम दिया हुआ है? कोई भी टाइम ऑफ योर चॉइस बताओ. 2230. ओके, 2230 दे रखा है.
अब हमें पता है कि 22:30 टाइम को अगर हमने पिक किया और उसमें हमने मिनिमम जो 2 आवर 50 मिनट का इंटरवल है वो डाला, तो वो नेक्स्ट डे में जंप होने वाला है, तो वो तो 11th डे में आ जाएगा नवलखी के लिए, राइट? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो किसी भी केस में ऐसा हो सकता है 4 से ज्यादा भी इंटरवल बन जाए। 4 से ज़्यादा टाइम आपको आई डाउट बेटा, 3 टाइम तो हो सकते हैं, बट 4 से ज़्यादा टाइम जो है, आई डाउट कि आपको 4 से ज़्यादा टाइम कहीं पे मिलेंगे। यू विल नॉट गेट इट। ओके सर। कोई 1% चांस समवेयर बेटा, किसी न किसी पोर्ट में अगर कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाए तो ये चीज़ हो सकती है, बट वेरी वेरी रेयर बेटा। आपके 3 टाइम तो हो सकते हैं किसी भी पोर्ट में, पर 4 होना इज वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर। ओके बेटा, क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now, if you see the time difference here, it's at the secondary port, the tides are lagging behind by about 3 hours. So if you apply plus 3 hours here, you see that the tides that shall be applicable to us would be, one would be this one, that is low water at 22:46 on 9th of April. And then you'll have these 3 tides. Why? Because if we apply plus 2 or plus 3 hours to this one, this will go to date 11th. We are only interested in tides on 10th April. So now we have the low water at 22:46. Height of low water is 2 meters. We have a high water at 0400 hours. Height is 3.3 meters. We have a low water at 10:20. Height 1.3. We have a high water at 17:49 and height is 3.7. Next, we have to algebraically subtract the seasonal correction at the standard port, which is Bombay. Here is the seasonal change table. Bombay number is 4359, which lies in this range, 4355 to 4363. So what is the seasonal correction you are getting beta for April? सर बोलो बेटा। सर पिछली स्लाइड करोगे, वो जो टाइम देखना था सर। ओके, पीछे वाली कर देता हूँ बेटा, ये लो बेटा। सर पिछले 2 to 46 इसलिए है क्योंकि आगे 3 है, तो पिछले का लो ले लिया। नहीं बेटा, नहीं, इसलिए नहीं लिया है कि आगे 3 है, हमें उसके 4 बनाने हैं, नहीं, इसके लिए नहीं लिया है। हमने इसलिए लिया है, आप इनके टाइम डिफरेंस देखो, नवलखी के जो टाइम डिफरेंस यहाँ दिख रहे हैं आपको, क्या टाइम डिफरेंस है बेटा? सर 250 का है और है 330 का। वेरी गुड। मिनिमम अगर मैं 250 का टाइम भी ले लूं, 2 घंटे 50 मिनट, मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा बॉम्बे के टाइम में, करेक्ट? अगर मैं इसे बॉम्बे के टाइम में ऐड करता हूं, 2246 के टाइम पे अगर मैं 2 आवर 50 मिनट को ऐड करता हूं, तो मुझे बताओ ये जो टाइम आएगा ये 9th डे में आएगा या 10th में चला जाएगा? सर ये 10th में आ जाएगा। राइट, और हमसे उसने 10th के टाइड्स निकालने को बोला है, इसलिए हमने 2246 को इंक्लूड किया है। ये सर MHW के टाइम डिफरेंस से हमने लिया है, उसको ऐड करना है, तो फिर तभी ऐड किया इसको, नेक्स्ट डे में आ गया 10th में। राइट बेटा, राइट। एक्चुअली इस केस में जो 2246 पे लो वाटर है, अगर आप देखो 2.0 मीटर, इट इज द लो वाटर। इस केस में जो एडिशन होगी वो 3 आवर 30 मिनट की होगी। ओके, मैंने तो दोनों में से मिनिमम फिगर पिक कर ली थी कि कोई भी अगर होता तो हम तो नेक्स्ट डे में जा ही रहे थे, बट एक्चुअली इस केस में जो ऐड होगा वो 330 आवर ऐड होगा, और जब इसमें ऐड होगा तो ये 10th डेट में चला जाएगा। ठीक है सर। ओके,
Very good, beta. So we come to the seasonal correction now. What is the seasonal correction for Bombay, beta, in April? Sir, 0.0. Very good. 59, which lies in this range, 4355 to 4363. Month in question is April. Obviously, the seasonal correction for Bombay happens to be 0, and we apply it here. Since it's 0, it may not make any difference, but please remember, we have to algebraically subtract the seasonal change for the standard port. Next are the differences in time and height. Let's deal with the time difference first. Data for the standard and the secondary port we are already familiar with. Now here is the time difference for the mean high water. ओके सो अब देखो बेटा, हमारा हाई वाटर का टाइम था 0400, ये पहला हाई वाटर है। दूसरे हाई वाटर का टाइम था 1749। अब यहाँ पे इन्होंने हाई वाटर के लिए एक ही करेक्शन दे रखी है, वो है +2 आवर 50 मिनट। इफ यू रिमेंबर ATT 1 में बेटा हमें कितनी करेक्शन दे रखी थी उन्होंने? 4 सर। हाँ, 2 करेक्शन थी और 4 टाइम थे ऊपर, और नीचे 2 करेक्शंस थी। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्शन है। सो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरपोलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी हाई वाटर टाइम होने दो, उसमें हमेशा 2 आवर 50 मिनट ही ऐड होगा। सो क्वेश्चन सिंपल हो गया? यस सर। राइट, सो लेट्स ऐड इट, which is +2 hours 50 minutes. Unlike the European waters, where this time difference was to be interpolated, here we do not need any interpolation. It's for mean high water. So the time difference for mean high water is +2 hours 50 minutes. So we apply +2 hours 50 minutes of time difference. You can see high water is here, so time difference +2 hours 50 minutes. High water is here, time difference is +2 hours 50 minutes. बेटा दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ATT 1 एंड 2-3। 1 में हमें टाइम डिफरेंस के लिए इंटरपोलेशन करनी पड़ती है, 2 एंड 3 में हमें टाइम डिफरेंस के लिए कोई भी इंटरपोलेशन नहीं करनी पड़ती है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सो लेट्स प्रोसीड। Exactly the same way, we have time difference for mean low water, and the time difference happens to be +3 hours 30 minutes, which obviously will be filled in here. And also at the next low water out here, the time difference happens to be +3 hours and 30 minutes. Now we come to the height differences from the same data. It's more or less similar to what we did in secondary ports at the European waters. इफ यू लुक एट हाइट डिफरेंसेस बेटा, ये बिल्कुल सेम है जैसा ATT 1 में था। हमें उन्होंने 2 हाई वाटर दे रखे हैं, 3.3 एंड 4.4, दोनों के लिए अलग अलग करेक्शन है। सो हमें अपने हाई वाटर के लिए इसे इंटरपोलेट करना है। सो एग्जैक्टली सेम एज वी डिड इन ATT 1। We have the height difference for mean high water spring and mean high water neap. We can make a table out here. You can see at the standard port, when the mean high water spring is 4.4 meters, the height difference at the secondary port is +2.8 meters. And when at high water, its mean high water neap and height is 3.3 meters, the height difference happens to be +2.9 meters. And now for our height of high water at the standard port, we shall interpolate as well as extrapolate if the need be. What is our first high water? Let's see. Our first high water is 3.3 meters. That 3.3 meters is same as mean high water neap. Obviously, the height difference shall be +2.9, and you can see +2.9 coming in here. So beta, is this okay up to here? This was simple. It was matching with one of the values.
Yes, sir. Very good. What is our next high water? It's 3.7. So can you tell me, beta, what should be the figure for 3.7? सर 2.9 ही आ रही है, बहुत कम डिफरेंस है. That's right. The difference between 2.8 and 2.9. So nothing, no difference, almost 0.1. Right. 3.7 shall lie between 3.3 and 4.4. We shall interpolate, and the height difference comes to plus 2.9, and that gets filled in here. Exactly the same way, we shall deal with height differences at low water. We have the height difference for mean low water neaps and mean low water spring. So we replicate a similar table out here. When its mean low water neap at the standard port is 1.9, the height difference is 0.2 meters plus 0.2 meters. When its mean low water spring of 0.8 meters at the standard port, the height difference happens to be nil. What is our low water? Our low water is 2 meters. Where would it fit in? It would fit in somewhere here, so it needs extrapolation. When we extrapolate, we get the height difference to be 0.2 meters plus 0.2. That gets filled in here. Our second low water is 1.3 meters. 1.3 meters will fall between these two. And when we interpolate, we get the height difference as plus 0.1 meters, which gets filled in here. All okay up to here, beta? All clear? Sir. Very good, beta. Let's proceed ahead. Lastly, we have to algebraically add. Please back, sir. बोलो बेटा. Please back करना सर, वो लिख रहा था सर. Okay, okay. ये लो बेटा. Okay sir, continue sir. Thank you sir. Okay. Here. Lastly, we have to algebraically add, I repeat, the seasonal change for the secondary port. We have the seasonal change table. Our secondary port number is 4331 for Navlakhi. 4331 would lie in this range of 4328 to 4335. Month in question happens to be April. And we get the seasonal correction as again nil. It gets filled in here. In this case, the seasonal correction being 0 may not make any difference. But again, just to repeat, seasonal change for secondary port has to be algebraically added. And now we are ready to get the time of high and low water and height of high and low water at a secondary port on 10th April 1992. You can see when the time difference is allowed for this low water at 22:46 on 9th, it becomes 02:16 on 10th of April. So we get these are the times of low water, high water, low water, high water, and their corresponding heights we get here. We can tabulate them here. The tidal predictions for Navlakhi on 10th April. At 02:16, we shall have a low water of 2.2 meters. At 0650, we shall have a high water of 6.2 meters. Then at 1350, we shall have a low water of 1.4 meters. We tabulate it here. And lastly, at 2039, we shall have a high water of 6.6 meters, which gets tabulated here. So these are the times and heights of tides at Navlakhi on 10th April 1992. Okay, beta. So this completes our question for Navlakhi. So you see it is exactly same as ATT1 with only one difference, which makes the question easier for us, that there is no interpolation for time differences.
So that completes our ATT 2 and ATT 3. 2 and 3 की पोर्ट्स की बेटा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, दोनों बिल्कुल सेम मेथड से की जाती हैं. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. So with this, basically we complete the tidal calculation for all the scenarios: standard port, secondary port, ATT1 and ATT2 and 3.